Now, here we are understanding the law of buy-in. We are learning irrefutable laws. We are understanding what do you mean by a leadership. We are investing our time to understand various laws. If we apply those laws, it will help us to understand the leader more. So, this one is the law of buy-in. It says people buy into the leader and then vision. First, you like a person. First, you like the way of a person. Then you will you will attract it towards the vision of that person. पहले person समझ में आना चाहिए ना. Suppose one of the intoxicated person going from road is coming to you and telling you the philosophy of life. Are you going to accept it? Are you going to accept it? Answer is no. Because once if I accepted him as an intoxicated person, then I will not accept his everything. Why? Because ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है तो हमें क्या संभालेगा? ये खुद का रास्ता भूल गया है और हमें क्या रास्ता दिखाएगा? Why it happens? Because we first impressed by a person. We first impressed by a person. If someone of your friend is giving you some kind of suggestions on how to save money, and if you look at him and if you ask him that how much money you have saved now, he would say that in zero, or rather you will come to know by his experience that he was the example of mismanagement. Lots of loans are there. He could not pay credit card bills, so fines is been there. And if it will happen, then what is the else, what is the point if I will appreciate that person? There is no point. So it is very necessary that the first person should understand. So buy in का मतलब यही है, the law of a buy in. Because people react to the leaders and their message. When Mahatma Ji Gandhi saw that I am wearing a three-piece and I am, doing a battle for this nation and a citizen of this nation, my sisters and brothers of nations are not having a clothes to wear. When they saw that one woman was, had only one piece, then he decided that not to wear a clothes, because I don't have a right to wear a cloth if my followers, my mates, my colleagues, my nation, citizens of a nations for whom I am battling, from whom I am conflicting, from whom I am, going against the English people. Then people started believing on Mahatma Ji Gandhi. Even the people who started believing the Mahatma Ji Gandhi, who had never seen him, only with his thought. Otherwise, to go on non-violence mode and to become one of the best person in the history, it is very difficult.
Now understand, now we are understanding that we will appreciate the person first. Now appreciation of a person and appreciation of his ingredients are something different. So we are appreciating the person first, and then if once we understand, then we will go with the vision. It is called as a buy-in process. What do you mean by the law of victory? What law of victory says? Every leadership station is a different. Law of victory says every leadership station is a different. As a result, they figure out what must be done to achieve a victory. Every leader is a something different. Every attitude of a leader is a something different. Every thinking is a something different. Every point is a something different. And then as a result, they figure out what must be done to achieve victory. हमें विक्ट्री अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? In every circumstances, and let us understand first what do you mean by a victory. For some people, victory means desired result. जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो मुझे जब मिलेगा, then it is called as a victory. For some people, victory means satisfaction of the people. It means जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, satisfaction of those people can be a victory for me. For some people, victory means what I feel is a victory, when inner satisfaction is a victory. Now please understand. Morning when I went for a walk, someone of my friend walked for 7,000 steps and I walked for 5,000 steps. And if I satisfy with this, if I'm feeling fresh, then it can be a victory for me. How to handle a teammates, how to handle a situation. We are going to study the law of momentum also. That is what the situational law, right? A good leader always positive in such a way that he can realize, he can visualize, he can imagine a victory in each and every moment. Each and every moment. I will tell you the example. What do you mean by the victory, and how you can cultivate yourself as a leader to win the victory, to win the situation. Somebody come to you and will ask you the question. I want 15 minutes you just tell me. Can you just tell me within a 15 minutes what should be what you will guide me in case of a career guidance? Somebody will come to me and will ask a question that within 1 hour, can you just give me or guide me a career guidance? Somebody will come and say that can you just take a workshop over 8 hours, 6 hours, 4 hours on a career guidance? What you are going to do? How you are going to do? ये जिसे मैनेज करना आया उसको विक्ट्री का पता चला. विक्ट्री का always doesn't mean that Chaitanya is going with the 1-2 bombs and just throwing onto the Pakistan and all dies, and he coming back and he says that victory.
हम सिर्फ इसी विक्ट्री की बात नहीं कर रहे. What was a problem in me yesterday, if I overcome that problem today, it is also victory. Maxwell says there are three components of a victory. First is a unity of vision. Yes. Unity of vision. Now I tell you the small example of a unity of vision. You might have seen some movies, Hollywood movies. And one of the movies like this, the people are caught into a tunnel. Their metro was collapsed in a tunnel and they can't do anything. Now there were a mixing of a peoples with the various thoughts. Lots of thoughts were there. Lots of type of different psychology people are there. Two persons came forward and they take a charge of the situation, which was not appreciated by 2-3 people. But once they understand that these two people have a vision, they are right leaders with their activities, they also started coming it unless and until all the people. Why? Because एक ही point था इससे बाहर निकलना. That was the only vision. बाकी का कोई vision नहीं था. टनल से बाहर निकलना ही vision था. Now all people, all person, after some time, they come and say that we are with you. Tell me now what we have to do. Now it becomes easy for the leader to get a solution. Now he will ask a question: who is a doctor? Who is engineer? Who is a compounder? Who is architecture? ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है. Now he collected all the opinions. He uses the psychology for the managing that opinion, and the people come very successfully out of the tunnel. Diversity of skills. That is what I'm telling you. कौन है तू, ये क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है. लीडर को वो पता होना चाहिए. Leader is like a tailor. No, leader is like, a person who is working in a handloom. Crores colors of threads are coming in front of you, and you are choosing those colors and making a beautiful sari, making a beautiful shawl, warm shawl. When you look at the shawl, you will feel relaxed. Why it happens? Because the person, the maker, uses most of the colors very beautifully. And when he feels that ki itna acha lage na, where is the victory? When customer says it is a unique, it's a victory. And the last one, which is very important, is that leader is responsible for a victory, but he never said to each and every person that I'm responsible. He always says that we are responsible for a victory. That is what the dedicated to victory. It says that it is a teamwork. It's not a one-man show. It is a teamwork. Or rather, it because of you people. A leader never take a credit. And once the leader will never take a credit, सबकी victory होती है. और सब लोग, ये कमाल की strategy है, कमाल का relations है. You know, one says that कि नहीं, Papa says that कि अरे वाह, बहुत बढ़िया. You come first in the 10th standard. It's very nice, excellent. And I'm feeling very proud. This is the language of a father, and the language of the son is that no, it happens because of you. You gave me a money. You created an atmosphere that I can learn. You just always be in my life. You always keep your hand on my shoulder, so it could possible. You always guided me. You always motivated me in kind of depressions. Whenever there was a hard studies, whenever there was a hard subject, you helped me. So it is this victory belongs to you. Father says no, I just only gave you a circumstances or a conditions. It is you who did a hard work. This is the best relation in your life.
Now this is what the things what I wanted to tell you, that the big momentum. Momentum is a leader's best friend. Momentum का मतलब है ना, now please understand, I cannot explain you, um, I cannot explain you, I cannot define a momentum for you. Momentum को हम वो बोल सकते हैं कि you know, one of the scientists, I come to know that one of the scientists was sleeping, or he was taking a bath in his bathtub, and then suddenly he came with the eureka, 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 eureka concept, and that is what the momentum. That is what the momentum. Now, I cannot explain a momentum. Momentum means an opportunity which you should understand, and sometimes the opportunity come quickly at any moment. मैं आपको अगर मोमेंटम एक्जैक्टली एक्सप्लेन करूं तो समझ लेना कि वो मोमेंटम है जिस टाइम पे बारिश आ रही है, रास्ते पर गाड़ियां बहुत जा रही है, एंड यू कुड फाइंड दैट कि ट्रैफिक जाम इज देयर, सो एट द मोमेंट you are thinking and going from somewhere else, go through चांदनी चौक, ये इस तरीके से जा रहे हैं और अच्छी तरह से घर जा रहे हैं. So that moment when you decide that I have to go from this road and not from this road, that moment is very, very important. So accept that kind of momentum. And कब momentum आएंगे? When you keep cool yourself. आप जब शांत रहोगे तब momentum बहुत सारे आते हैं. Please understand. Right? You have to, momentum is leader who is using the momentum is a great exaggerator. Exaggerator का मतलब ये होता है कि फुला के बात करना. फुला के बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं, यार ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो होगा. दिस इज द बेस्ट example is Sri Nitinji Gadkari. He thinks beyond your limitation. Exaggerator. That is what he is a leader. I like his personality. I like his the way of thinking, guys. Think beyond something. Now you are giving a presentation, he ignore you, he went somewhere else. You feel that he is not interested, and you just forget and went to home also. After 1 year, after 6 months, whenever he required such kind of project, he call you and will ask you, then will hand over the project to you. You will get a surprise that ये क्या चल रहा है मेरे साथ. Triple bridges, 4th level bridges are building into the Nagpur. Exaggerator है ना ये, exaggeration है, ज्यादा है, अतिशयोक्ति है. लेकिन how to use it? Some people would say that कि ये क्या कर रहे तुम. Now he is, introduced. Now this is the best example of a momentum. He introduced seaplane. अपने गांव में नांदेड़, मराठवाड़ा, यहाँ पर जहां जहां तालाब है वहां पे he is introducing seaplane. Yes, sir. Yes, Advait. Now he is introducing, or he is already introduced, Bombay to Goa by sea cruises. Nobody has thought. Nobody has thought in such a way. Exaggerator इसे बोलते हैं. और एग्जीक्यूटर का एक नेगेटिव पॉइंट होता है. नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जब तक आप कंप्लीट नहीं काम करते ना, तब तक आपका आपके ऊपर कोई यकीन नहीं लगता. इसलिए आपका आपके ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी होता है. Like Elon Musk, na sir? Sorry? Elon Musk. Yes. Right. Elon Musk, you take the example of Elon Musk also. No issue. Make leader look better than they are. This is the momentum which helps. Look better than that. जो है उससे भी बेहतर दिखने की ये मोमेंटम में कोशिश होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि यस कौन से जगह पे. Now this is the best example of the momento is taking a decision at the World Cup when the ball is given in the hands of Joginder Sharma. So junior person, अभी किसी उसका नाम भी किसी को पता नहीं है, but he was the person who thrown a last over in a World Cup.
there was a Harbhajan Singh who was more experienced than him also, and he had his over left. Still, Mahendra Singh Dhoni gave a last over to him. अगर वो गलती साबित होती तो महेंद्र सिंह धोनी को हम उसका पोस्टर जला देते, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर थे. आरपी सिंह was there and Moni Srishant was there. They were wicket taker bowler. Still you are giving that little boy. कभी कभी रिस्क लेनी पड़ती है. मोमेंटम, वो मोमेंटो था उसको, धोनी को, वो जो दिमाग में उसके आया था, वो मोमेंटम था कि वर्ल्ड कप उसको मिलने वाला. And it exactly happened, guys. It helps followers perform beyond their actual abilities. That's the momentum. Once you understood yourself, hey, my kar sakta hu, no issues. It gives ability beyond actual abilities. Please understand. Momentum is the most powerful agent of a change. Momentum is the most powerful agent of a change. यही एक momentum है. कभी कभी निगेटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन बहुत लेस निगेटिव इंपैक्ट होता है. और निगेटिव के डर से, मृत्यु के डर से जीना कब छोड़ देंगे यार हम? डेथ इज ऑलवेज देयर, नो इश्यूज. बट जिएंगे नहीं जिएंगे? जिएंगे ना, ऑफ कोर्स जिएंगे. क्यों नहीं जिएंगे? खुशी से जिएंगे, अच्छे जिएंगे. Unless and until the death will come, or whenever the death will come, even though I will give a smile to him also. Momentum, please understand. पकड़ो इस मैसेज को पकड़ो यारो. You will not lose yourself if you listen by this session. You will become a good leader. You will become a good team player. मुझे फॉलो करना है, मैं फॉलो भी प्यार से करूंगा. मुझे सबको लीड करना है, मैं लीड भी प्यार से करूंगा. मुझे कुछ बोलना नहीं है, सबके साथ चलना है, मैं सबके साथ भी प्यार से चलूंगा. Understand the situation, momentum. Sometime it may happen for your father and mother will call you for a marriage where you will get a bore, but you have to go at least sometime. Why? Because you are not going there for the marriage couple, you are going there for the people who gave you everything of their life. ये समझ में आना चाहिए. ये समझ में आना चाहिए. नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं बोर होता हूँ, I will not go. I no. लेकिन why these people? He father who is doing hard work also wants to show you as a brave boy of him to the society. He also wanted to introduce you in their marriage, saying that कि देखो मेरा बेटा. But beta is saying that क्या, I will not come. तो वो नाराज हो जाते हैं. मोमेंटम पकड़ना नहीं आता है ना. I am not telling every day you should go. No, not like this. But always keep a balance. Always keep a balance. So very important, guys. Very important. And problem क्या है पता है? Problem ये हम सब नहीं कर सकते ऐसा नहीं है बेटा. हम सब मिलकर सब अच्छी तरह से ये सब चीजें कर सकते हैं. प्रॉब्लम वो है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से जो मैच होता है वही चीज हम करते हैं. और एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन इज समवेयर इनटू द लग्जरी मैटर, समवेयर इनटू द अदर मैटर. I have one friend whose salary is 2,20,000 rupees per month. Doing his job in Bombay, going and coming sometime every day or sometime every Monday he used to go there. He has a Tata Nano. Can you believe?
using the Tata Nano. He has converted Tata Nano on a CNG because he said that it is a car which not allowed me to run more than 80, which is good for my health, which is good for my career, which is good for my family safety. It is a car where I'm more enjoying because it is a very easy for me to purchase a Mercedes Benz also. बट लेके रखना है पार्किंग में और ऊपर सोना नहीं है हॉल में टेंशन लेकर आई विल नॉट डू दैट सी आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू पीपल टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू सम साइकोलॉजीज हियर वो आपका काम है somebody will say that कि no Mercedes के लिए ही मैं जीता हूँ तो Mercedes ले सकता है I'm absolutely not against anything I'm just keeping the fact in front of you my duty is to keep a fact मेरी ड्यूटी है आपके सामने जामुन रखना कौन सा लेना है वो आप देखो he is enjoying not only is enjoying he is you know keeping his name into the carpooling also he कंजूस नहीं हो लेकिन he is you know open his account in a carpooling and always go with the 2 or 3 people he used to take 200-300 rupees is very minimum less amount for the CNG purposes also और उसका जो टोल नाका है वो कंप्लीट होने तक वो लेता है एंजॉय करके जाता है लोगों के साथ बोलते रहता है एंड नाउ बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर बिकॉज ऑफ हिज कार is going with the safety handle very nicely that there are some 2-3 women 2-3 boys and 2-3 persons are there who always book his car excellent I like this he has purchased a 2 BHK he is not hurried to purchase another BHK he is spending lot of money on his enjoyment lot of money on his children's health securing the future sharing his enjoyment with his friends relatives he always try to attend some marriages with a so very nice and expensive gifts he's not keeping money always in his pocket and he is a down to the earth even though he is using a 5,000 rupees shirt but that if you look at him then you will feel a relaxed calm cool what I want to suggest is that don't do that like this आपको ऐसा नहीं करना है या करना है आपकी जिम्मेदारी है लेकिन I want to say that कि you know momentum है जो life का what is the enjoyment what is the enjoyment I have seen some people जिन्होंने लीव ली है क्योंकि they forget to use a perfume उन्होंने गलती से उसके वाइफ ने उन्होंने ऐसा कहीं पर मिसमैच हुआ और उन्होंने परफ्यूम नहीं मारा इसलिए उन्होंने लीव ली क्योंकि विदाउट परफ्यूम हाउ आई कैन गो टू द इंडस्ट्री वो भी मेरे फ्रेंड्स है और मैं उनसे भी अच्छी सी मस्ती करता हूँ बोलता रहता हूँ बट अंडरस्टैंड these are the learnings available into the market people are excellent people to whom you can learn lot of things that's the very important priorities I always ask this question to myself you also ask this question to yourself are you being a productive or just being a busy what you have done today what you have done today I used to write a diary at that idea I used to write that कि मैंने आज ये चीज ऐसी बच्चों को पढ़ाई कि बच्चों को 101% लाइफ में कुछ ना कुछ तो फायदा होगा yes I am a productive person yes I am a productive person in lockdown 5 days my parents were there and we people were feeling a little bored then I purchased a flour mill now understand guys it's not necessary for me to earn from flour mill I'm earning enough I'm happy in my life and more is going to become in my life so I'm never worried about this kind of, but I want to tell you that purchase a flour mill and give this to the
my parents' task. Now so many people are coming, we are talking with them, we are earning also 1 rupees 2 rupees something kind of things. उस पैसे का कोई ये नहीं है, वहां पे उस पैसा मिलने वाला है, बहुत कम होता है, लेकिन वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन 4 दिन के बाद 5वें दिन से 10वें दिन तक बोरिंगनेस चला गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रायोरिटी इन दैट डे आई कंप्लीटेड। पीपल आर कमिंग, देन वी आर मेकिंग अ टीज। एक चाय बनाता हूँ 10 रुपए का, और फ्लोर मिल में 1 केजी का फ्लोर निकालने का 5 रुपए, 6 रुपए। That doesn't matter, but we enjoy that moment. Something new is coming, and these people, my family members, were involved in this, making this, cleaning it, making it, keeping it. It was new for them, which was not necessary at my home. Now understand these things. Are you being productive or just being busy? Right? आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हैं? Now remember 3R. One is required, return, and a reward. What is required? Z and a ch. Always remember Umesh says दो शब्द, j and a ch. j जरूरत, च चाहत. जरूरत, my जरूरत is 6 GB RAM, 120 GB ROM. My चाहत is OnePlus, Apple, BlackBerry, OnePlus Nord 9. चाहत। आप बोलेंगे सर नहीं ऐसे, नहीं नहीं नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं पर्सनलाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं थिंग्स ओरिएंटेड बोल रहा हूँ, मैं सिचुएशन ओरिएंटेड बोल रहा हूँ। समबडी, ऐसा क्वेश्चन आएगा सर लेना नहीं है कि, फिर लेना है, जरूर लेना है, लेकिन उस टाइम पे लेना है जहाँ कर्जा नहीं निकालने के लेना है। उस टाइम पे लेना है जहाँ पे कम से कम 6 महीने में घर में आपका राशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उस टाइम पे लेना है जब बाप के पैसे के ऊपर मोबाइल नहीं लेना है। हम कमाएंगे, हम लेंगे, उनको भी लेके देंगे, उस तालीम में जब आएंगे, उस हैसियत में हम जब आएंगे, तब हमको लेना। Otherwise, no, I have seen so many people. I have seen my students also. They can't speak one English sentence and they are having an Apple phone. And when I had a discussions with their parents, when they used to come and meet me, a parent meet, then they said that is it necessary that मुझे मेरे बेटे ने बताया कि एप्पल का ही लैपटॉप कंपलसरी है हमारे कॉलेज में, इसलिए हमने उसको 92,000 का एप्पल का लैपटॉप दिया है। सही है, क्या बोलेगा मास्टर उसके सामने? नो ना बोले तो कितना दुखी होगा, यस बोलो तो मेरा एथिक्स अलाउड नहीं है। Why as a student you are creating such kind of situations? That is what greatest return. What gives the greatest return? When you set your priorities, when you decide your priorities, it will give you a greatest return, guys. What is the greatest reward? What brings the greatest reward? Satisfaction, time, work at a time. ये सब चीजें आपको greatest reward देंगी, isn't it? That is called as a priorities. Are you with me, all of you, or मैं अकेला? Yes. Yes, sir. Enjoying? Yes, sir. ठीक है, चलो। Sacrifice. हा। क्या है ये sacrifice? Leader must give up to go up. कुछ चीजें क्या है, वो डायलॉग क्या है अद्वैत? Yes sir, क्या डायलॉग क्या है? आपका आवाज ब्रेक हो गया। डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है वो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। Sacrifice, that is what it is written na, the leader must give up to go up. The leader must give up to go up. कुछ छोड़ना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, एटीट्यूड छोड़ना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। खुला छोड़ना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी गधे को भी if you know each and everything. Why? Because your purpose should be a best. Your purpose should be best. चंदा मांग रहे हो लेकिन क्यों मांग रहे हो? I have seen when I was in childhood, I have seen in my this and Ganesh festival, people used to ask for the chanda. They purchase a one Ganesh statue, and at the end, 2-3 days before they started, they came together, went to the one of the field. 15 दिन 10 दिन तक फील्ड में जाते थे, दारू पियो, चिकन खाओ, मटन खाओ। चंदा का इस्तेमाल ऐसा बताते क्या है गणेश जी? नाउ ये निगेटिविटी आपके दिमाग में वापस आ जाती है गाइस, वापस आ जाती है दो तरीके से। आप अगर अच्छे बिहेव नहीं करोगे, आप अगर अच्छे बिहेव नहीं करोगे तो दो तरीके से आपको वो तकलीफ देती है। एक, आपका जमीर आपको सोने नहीं देता है। दूसरा जब आप किसी को चंदा देते हैं तब ये ख्याल आता है कि वो whether he is utilizing for the main purpose or whether he is eating a chicken or mutton, और उस नेक बंदे के ऊपर हमें डाउट आता है क्योंकि वी आर डाउटफुल एंड आई डिड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सिली थिंग्स इन माय लाइफ। यू शुड सैक्रिफाइस। नाउ सैक्रिफाइस का मतलब मराठी में एक, देयर इज वन स्टेटमेंट इन अ नट सम्राट मूवी, the wife of a नट सम्राट used to tell him that समोरचं ताट द्यावं. Now I hope that if you understood Marathi. Have you understood Marathi? All of you? 18 Yes. people are there, 17 people. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. समोरचं, जयश्री, समोरचं ताट द्यावं पण बसायचा पाट्ट कुणाला देऊ नये. हो सर. समोरचं ताट द्यावं. आपण जे जेवतोय ते ताट द्या एक वेळेला, पण आपण जे बसतोय ते पाठ पण तुम्ही द्यायला निघाला तर वेअर यू आर गोइंग टू सिट, व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, व्हॉट यू आर गोइंग टू ईट. This is the only probe, Marathi probe. It shows that you keep something with you. I'm not telling you sacrification. It means that whatever you have earning today, I'm going to donate everything. I'm not taking care of my wife, my son, my father, my brother and all. इस तरीके के sacrifice की बात मैं नहीं कर रहा। Sacrifice का मतलब है 2 कदम पीछे आना in case of leadership. Sacrifice का मतलब है sacrifications of your time, sacrifice of your attitude, sacrifice of your sometime you have to, this is the best sacrification. The best sacrifice example is respected Chhatrapati Shivaji Maharaj when he did it. है ना? तह he did a तह. He did a compromise of a 23 foods. Now, most of the people were saying that don't do it. We have taken it. We have lost so many people. But he only knew that we have lost 50 people to get a 23 foods. Now we will lose 1,000 people if we will not give this 23 food. He did a compromise on a 23 food, and then once he did a compromise, he set back. वो 2 कदम पीछे गए. Sacrifice इसको बोलते हैं. 2 कदम पीछे गए, and then he again come like a panther,
again come like a panther and he conquered 223 forts. ये जो पहले किया ना, इस सैक्रिफाइस की मैं बात कर रहा हूं. हारने वाला सैक्रिफाइस नहीं, जीतने वाला सैक्रिफाइस चाहिए मुझे. क्या फर्क पड़ता है, उसको अप्रिसिएशन मिला. क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी कितनी खूबसूरत और बड़ी है. क्या डायलॉग है, बाबू मोशाय, जिंदगी. जय श्री, क्या डायलॉग है? सर नहीं पता. आई कुड नॉट हियर यू बेटा. यस मयूरा, अक्षता, ओंकार, शुभदा. सी मैं एक ही काम कर सकता हूँ, आप सबके एक एक 2-2 मिनट के लिए मैं नाम ले सकता हूँ. अगर उसमें भी आप अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो आपकी कहानी है. क्या डायलॉग है, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. बड़ी कब होगी? व्हेन यू डू अ सैक्रिफाइस. यस सर. When you do a sacrifice, when you do a compromise, when you do adjustment, not with only ethics. I'm not telling you with ethics. So many patients are there outside, but when doctor is checking the child, he used to smile. He's not worrying that कितने लोग बैठे. अगर वो thinking करेगा तो ये भी जाएगा और वो भी आपको देख रहे हैं कि how you are tenderly taking and talking with the son kid. दुनिया का कोई भी सक्सेस सैक्रिफाइस के सिवाय नहीं है. कोई भी सक्सेस. I used to give you the example of Nelson Mandela. 20 years he was there in a jail. Let's take the example of a Swatantraveer Savarkar. How many years he was in the jail? Guru Gobind Singh. You know, these are the personalities. सूली पर चढ़ गया अपना, अपनी आदमी हमारा सूली पर चढ़ गया. जीसस. क्या है ये लेवल, क्या है सैक्रिफिकेशन का, सैक्रिफाइस का? क्या उसके हाथ में कुछ ताकत नहीं थी? स्टिल ही सेड, भगवान इनको माफ करना. क्या है ये? इसी उसके एटीट्यूड से ये गॉड बन गया है हमारा. इसी एटीट्यूड से अल्लाह हमारा गॉड बन गया है. When he says मुसल ईमान, ईमान का पक्का हो वो मुसलमान है. When he says, ये people, these people are there in our mind because of their sacrification, because of their sacrifice. You must keep giving up to stay up. आपको अगर रहना है, आपको अगर ऊपर जाना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजें छोड़ना पड़ेगा. छोड़ना इसका मतलब पीछा छुटवाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं. कुछ ना कुछ तो आपको कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आता है. इफ यू आर कमिंग एंड यू नो, आई टेल यू, when I was coming from, just a minute, I'll just go. बॉम्बे में Toyota Innova car used to come and drop me up to Shivneri stop at Dadar. Dadar, there was one person who used to carry my bags. There was another person who was there on going into the window for ticket. He took ticket, came with me on Shivneri, asked me that, sir, this is your chair. When I sit, he used to come with a 1 or 2 bottle water
one a sandwich and another Lay's pack. He keep my bag on the upper side, went there. When I come at a Chandni Chowk, now understand it, guys. When I came at a Chandni Chowk, because if I want to, I stay at the Katras. So if I want to came to the Katras via Swargate, it become difficult for me. So I used to come at a Chandni Chowk. टाई निकल दो, इनशर्ट थोड़ा सा लूज करो, वड़ाप में बैठना है आपको, वड़ाप में बैठो. I had a car, but distance is so high. I never allow my wife to go for that kind of things because I care. So वड़ाप में बैठना है. वड़ाप वारजे तक ही है, रात के 10 बजे है और वड़ाप वारजे तक है. वारजे में रुकना है, रोड हाईवे पे. किसी को भी हाथ करना है. When two wheeler one or two wheeler used to come, we'll sit on the two wheeler. टू व्हीलर वाला मतलब वडगांव ब्रिज तक छोड़ता है. टू व्हीलर के आगे अभी कुछ नहीं है. Then one or two trucks are going towards the Dari Pool नया tunnel. Then I used to go there. Then I went into the truck. उसको 5 रुपए देकर ट्रक से उतरना है. फिर एक साइकिल वाला आ रहा है वहां से, दूध वाला भैया शाम आ रहा है, तो उसके साइकिल पर बैठकर आई एम कमिंग एट माय होम. इफ आई कुड हैव एटीट्यूड इन दिस वे, जर्नी टोयोटा इनोवा से शुरू हो गई. ये भी टोयोटा इनोवा मुझे एयरपोर्ट से छोड़ा है. I came from Ranchi. I came from Ranchi to Bombay. Plane, Innova, Shivneri was Shivshahi something. Vada, truck, cycle, girl. Just remember it. Just I recall it, but I forget it. अगर उस एटीट्यूड से हाथ पे हाथ रख के अगर मैं चांदनी चौक में बड़ा होता या ऐसे खड़ा होता, तो I did not get some vehicles. You have to sacrifice your position, your attitude, whenever, whatever the things will come. So if you study leaders and their biography, you will come to know that sacrifice is which very important. छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इंग्रजों के साथ लड़ने के लिए गए हैं हमारे क्रांतिकारी बच्चे, छोटे छोटे. 17-18 साल का सा भगत सिंह, उसकी उम्र क्या थी? मेरा 14 साल का बेटा है. 10 बजे अकेले बारिश में जाते वक्त डरता है और उसको 17 साल की उम्र में फांसी. क्या लेवल का सैक्रिफाइस था उसके साथ. वी हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड गाइज. मेरा काम है आपको इग्नाइट करना. अब जलना, जलाना या बुझना आपका काम है. Law of timing, that's the very important, guys. When to lead is an important, as what to do and where to do, where to go is also important. Timing, wrong action at a wrong time leads to a disaster. We'll tell you the one incident which happens with me, which I can see. The wrong action at the wrong time leads to disaster. ऑफिस में एक लड़की के पापा को लड़की की मौसी या माँ गुजर गई. She was crying and she said that as a boss came and 5-6 people we were there around her. We will keeping sympathy दे रहे हैं हम, कि बोल रहे कि डोंट वरी, घबराना मत. शायद माँ थी या माया मौसी थी, मुझे याद नहीं. मेरा एक फ्रेंड था. while talking she said that कि मैं कल भी मैं टेंशन में थी,
पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया, मुझे रात को नींद भी नहीं आई, मुझे ऐसा लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर से रोने लगी। और बहुत प्यार करती थी, शायद मौसी ने उसको संभाला था माँ से ज्यादा, ऐसा कुछ तो वो रिलेशन था। आर यू विद मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. There was a Yes, sir. yes, and there was another my innocent friend. ये बहुत innocent friend था, बहुत ही innocent ना guys, I'm telling you, innocent. लेकिन पॉइंट क्या है देखो, व्हाट इज सेड, जैसे वो बोली कि कल मैंने तुम्हें शायद मैंने तुम्हें दुर्वांकुर में कल देखा। Wrong action at the wrong time leads to a disaster. सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े। 15-20 दिन के बाद हमने जब सर्च किया या उन्होंने सर्च किया तब वो सही था, वो थी दुर्वांकुर में, लेकिन खामखा इसने क्या किया, wrong action at the wrong time. रॉन्ग एक्शन है ना ये, क्योंकि उसमें घर में कोई मर गया है, तो अभी एक्शन क्या देनी चाहिए, रिएक्शन क्या देनी चाहिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या? द राइट एक्शन एट द रॉन्ग टाइम, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, इट ब्रिंग्स रेसिस्टेंस। सो टू इम्प्रूव दिस वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट, पहले हमें फैक्ट अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग आप कुछ लोग आपके काम कर रहे हैं ना, तो जब लीव आपको चाहिए लीव, तब आपको पता है ना बॉस का मूड कैसे देखना है, एंड देन वी आर गोइंग इनसाइड एंड टेकिंग अ सिग्नेचर ऑन अ लीव। कौन से माहौल में जाना है, अगर आपको पता चला कि उसके पहले जो आदमी गया था उसको बहुत चिल्ला रहा था, वो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो तो आप लीव मांगने के लिए नहीं जाते। आर्ट ऑफ टाइमिंग, you should have a confidence on yourself, experience, intuitions, preparation. These are the things, if you apply it in you, then the timing will be performed. Wrong action at the right time is a mistake, but mistake can be recovered. Mistake can be recovered. Right action at the right time results in a success. लोहा गरम है तब तक हथौड़ा मार दो। Now this is the 2-3 points we left. The law of explosive growth. यहाँ पे ग्रोथ के बारे में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे 2 टाइप के पर्सन एग्जाम्पल में है। एक है जो आम आदमियों को मोटिवेट करता है ग्रोथ के लिए, और एक ऐसा है जो आम आदमियों को मोटिवेट करने के लिए जो हेल्प करता है उसको मोटिवेट करता है। लीडर ट्रेन द पीपल एंड देयर आर अनदर लीडर हु ट्रेन द लीडर। नाउ यहाँ पर दोनों का हम स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंट फोकस, प्लीज अंडरस्टैंड। लीडर को सिर्फ लीडर कर नहीं रहना है, उसको और लीडर तैयार करने हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव ग्रोथ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एक्सप्लोसिव एंड ग्रोथ। You have to create a succession. वो next point में आ जाएगा, last point. So this is what the different focus. Leaders are hard to find. Leaders are hard to gather. आना बहुत डिफिकल्टी है, तो वो डिफिकल्टी सॉल्व करनी है आप लोगों को।
और सारे लीडर्स भी आपको क्रिएट करने हैं, ये भी काम लीडर्स का है. And the last one is the law of legacy. Legacy का मतलब succession है. Now this is a very nice question has been asked by Maxwell, the author of a book. What do you want people to say at your funeral? I used to take this kind of one game also. So I will give you my sessions link भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. 10-10 लोगों का मैं कभी सेशन लेता हूँ मोटिवेशन के ऊपर, मैं आपको वो लिंक भी शेयर करूंगा. What do you want to people say at your funeral? फ्यूनरल पर आपके लोग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मर गया अच्छा था, क्या काम? चांगला होता पण गेला हो. हा, चांगला होता पण गेला हो. Yes, you have to create a history यार. You should, when you are going, you should go with the peacefully, but other people should feel that he is the right person who gave me a lot of things. उनकी झोली भरनी चाहिए जब आप जा रहे हैं. उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि उसने आदमी नहीं तैयार किया, उसने लीडर भी तैयार किया. उसने टीम नहीं बनाई, उसने ऐसे लीडर्स बनाए जिन्होंने टीम्स बनाए. द लॉ ऑफ लीगेसी. एक्सलेंट लीडर. जब मैं राजघाट जाऊंगा या जाता हूं, तब अपने आप एक ऊर्जा मुझ में आ जाती है. मैं उस आदमी के थंब को देखने जा रहा हूं, उस आदमी को मैं देखने जा रहा हूं, उस आदमी के पार्थिव जहां पे रखा था, जलाया था, वहां पे मैं देखने जा रहा हूं. Where I feel internally a positive. That's called a legacy. And the last one, guys, thank you very much for this session. मैं आपको थोड़ा एक जर्नी हमने क्या देखा वो देखो. Potential of the organization is determined by the personnel. People से वो पता चलता है कि organization का potential क्या है. Moral of the organization is determined by the relationship. एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे, एक दूसरे के साथ आप क्या बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हो. अद्वैत एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एंड इफ आई आस्क समथिंग अबाउट दैट इंडस्ट्री, इफ अद्वैत को अगर पहला पॉइंट सक्सेसफुल हो चुका है, then and then only Advait will say good things about that industry. Or when you will say good things about industry, then I will understand the morals of that industry. XYZ person would say that यहाँ पे महिलाओं का ही काम है, हमारा कुछ काम ही नहीं है, महिलाओं को छुट्टी ज्यादा मिलती है, हमारे को नहीं मिलती है. मॉरल्स खराब होने लगते हैं. रिलेशनशिप. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर. हायरार्की कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, कोई प्रॉब्लम आता है, कैसे सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम, whether there is a freedom to solve it to the immediate person or not. Direction of the organization is determined by the vision. Direction of the organization is determined by the vision. Organization direction, vision क्या है, vision mission statement क्या है उसका. Potentiality पर लोगों से याद में रहती है. Morality आप रिलेशनशिप से पता चलता है. साइज टाटा स्ट्रक्चर से पता चलता है. कहाँ जाने वाली है, क्या है डायरेक्शन, विजन से पता चलता है. एंड द लास्ट वन, सक्सेस उस ऑर्गेनाइजेशन को लीडर से मिलता है. इसलिए लीडरशिप इज मच मोर इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाई वी हैव स्टडीड दिस 21 लॉज व्हिच वी अंडरस्टूड व्हाट लीडरशिप मींस. Have you satisfied? Have you understood these questions, my friends? Yes, sir. Great. Yes, sir. Great. Thank you very much. I have shared my feedback link. Those who have not filled feedback, I request you to fill that share link, which has been forwarded by Advait and Chaitanya, I think. Yes, sir. I already did it forward in group. Yes. So all of you are requested to fill that things.
Thank you, sir. with yes, Chetan. We will meet. We will meet tomorrow with a new unit, new time. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.